Good morning, children. Today again we'll discuss the topic prepositions. Students, this is my second video on this topic prepositions, and in the first video we discussed prepositions of place, and in this video we'll discuss prepositions of time and date. Let's move further. These prepositions indicate the time and date or the period of time at what something happens. Or in other words, a word that shows the time of the action done by a noun or pronoun is called a preposition of time. Preposition of time वो वाला वर्ड होगा जो हमें शो करेगा, प्रेजेंट करेगा टाइम किसका, एक्शन का, कोई क्रिया का, दैट इज़ डन किसके द्वारा की गई हो, नाउन और either by a noun or a pronoun. First one is throughout. Throughout means throughness in process and all over. In Hindi, Sara and Pura. Let's read the examples. It will be more clear to you. Like we worked throughout the night. हम सारी रात काम करते रहे. Throughout here means सारी, सारा, सारी रात. This rumor has spread throughout the state. पूरी स्टेट में ये rumor, ये अफवाह फैल चुकी है. Here throughout meaning of this word is पूरा मतलब पूरी स्टेट में. Next is around. Around means चारों ओर और आसपास. It is used for different contexts like for estimate. It is used for time also, for space also. Let's read the examples. The earth revolves around the sun. Around the sun. चारों ओर. Here around is used for space and here its meaning is चारों ओर. Around 20 people are coming. श्योरिटी नहीं है, एस्टिमेट लगाया गया है एंड इट इज़ हेयर एस्टिमेट किसका, नंबर का, नंबर्स का. आई विल बी देयर अराउंड 4 PM. 4 PM के आसपास. इट इज़ यूज हेयर फॉर टाइम. नेक्स्ट इज अबाउट. स्टूडेंट्स, around and about, these two prepositions are almost same. Their use is approximately the same, but even then we will discuss. About is used for reasonably close to. It is also used for numbers as about around was used, and it is also used for time. Like I ate about 10 apples. About 10 apples. 10 के आसपास. I will be there at about 3 o'clock. 3 बजे के आसपास. Next is by. By means at the side of, near. In Hindi, four meaning, four sense में से यूज़ किया जाता है. फर्स्ट इज द्वारा, से, तक सेंस होगी किस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, विद द टाइम. पास मीन्स नेक्स्ट टू, बिसाइड. एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन द्वारा की सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे तब ये होगा पैसिव वॉइस में यूज़. एक्टिव पैसिव वॉइस जिसमें कि ये काम किसी के द्वारा किया गया. बाय तो वहाँ नेसेसरी होता है लगाना. इट इज़ रूल. ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. यू कैन सी इन द पिक्चर. हेयर बाय मीनिंग इज़ द्वारा. पुलिस के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया. ही ट्रेवल्ड बाय बस. तो बाय का मीनिंग यहाँ से के से है. लाइक बस से उसने ट्रेवल किया. नेक्स्ट इज आई विल फिनिश माई वर्क बाय मॉर्निंग. यहाँ टाइम की सेंस में आ गया कि एग्जैक्टली बाय मॉर्निंग है तो मतलब ये टाइम लिमिट दे दी गई है कि मॉर्निंग तक काम हो जाएगा. नेहा लिव्स बाय माई हाउस. यहाँ नियर की सेंस में आ गया, नेक्स्ट टू की सेंस में आ गया.
नेक्स्ट इज़ फ्रॉम. इसका मीनिंग भी से ही होता है, बट कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी सेंस में हमने इसे यूज़ करना है. लेट्स रीड. फ्रॉम सम प्लेस, लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. तो दिल्ली क्या है? प्लेस. पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम लिमिट, लाइक आई विल वर्क फ्रॉम टमोरो. ये पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया कि कल से मैं काम करूँगा. ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 8 AM to 8 PM. यहाँ क्या आ गया? टाइम लिमिट, सुबह के 8 से शाम के 8 बजे तक. फ्रॉम इज़ ऑल्सो यूज फ्रॉम एनी सरफेस की सोर्स की सेंस में. लाइक आई बॉट इट फ्रॉम दैट शॉप. शॉप यहाँ क्या हो गया? सोर्स हो गया. मैंने इसे उस दुकान, उस शॉप से खरीदा. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग मीन्स इन द कोर्स ऑफ, दौरान, किसी के दौरान. ही यूज टू टेक रेस्ट ड्यूरिंग हिज वर्क. काम के दौरान वो अक्सर ही क्या करता है? रेस्ट लेता है. ड्यूरिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. It is also used to refer to an action taking place at some point in a given period. So, 2-3 things that you are to underline here. Action taking place at some point in a given period. For example, the sun gives us light during the day. दिन के दौरान हमें रोशनी देता है. He fell asleep during the film show. फिल्म शो के दौरान. नेक्स्ट, इन सेंस में भी इसे ड्यूरिंग को यूज़ किया जाता है, लाइक ड्यूरिंग द प्ले, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, ड्यूरिंग द वेकेशन, etc. नेक्स्ट preposition is since. Beta, since and for, these two words are used in present perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and in the same form of future also. So since is used for point of time. Underline point. When the time is exact. Circle this word also. Exact and point of time. Exact होगा time. Like it gives the starting point of actions, events and dates. हमें ये starting point कब से कोई काम शुरू हुआ तो वो टाइम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होगा. Like he has been studying since 5 PM. 5 बजे से पढ़ रहा है. It is used with these words also, in these sense also. Like since morning, since childhood, since Monday, since 2 o'clock. सिंस येस्टरडे, सिंस 1970, सिंस अक्टूबर. तो इन सभी जो मैंने ये रीड किया है अभी जो पार्ट, उनमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि कब से, एंड दैट इज द एग्जैक्ट वन. नेक्स्ट इज फॉर. फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम. कितने समय के लिए कोई चीज़. When the time is not exact, underline these two words or you can circle also. Not exact. Here time is exact, here time is not exact. He has been living here for 10 years. कौन से 10 सालों से वो यहाँ रह रहा है ये हमें पता नहीं, बट 10 साल दिए गए. He has played cricket for 2 hours. Like for 2 months it is used, for 10 years, for an hour, for a week. Next is till. Till and until, इन दोनों का मीनिंग तक होता है, एंड टिल जो है विद टाइम यूज़ किया जाता है. ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ इन नावा डेज किए जाते हैं ये दोनों prepositions. लेट्स डिस्कस. These two are used to indicate a time not earlier than or up to. मतलब up to या इतने समय तक कोई काम हो जाना चाहिए. Until means उससे पहले नहीं, तक की सेंस में ही इसे यूज़ किया जाएगा. लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स. आई वॉज देयर टिल जून. जून तक मैं वहाँ था. ही वॉज एट होम टिल 6.
Note one thing that you have to keep in your mind, that until, while using until in a sentence, you should not use what? It should not be followed by any negative word in the same clause. उसमें आपने कोई, जब until का यूज़ करना है, कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना, लाइक नॉट, नो, जिसकी नेगेटिव सेंस आ रही हो वो वर्ड आप जब until का यूज़ कर रहे हो वो नहीं यूज़ करोगे. नेक्स्ट इज़ एट. एट का यूज़ हम काफ़ी जगह पे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हैं. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक at these. At 6 p.m. with time also it is used, at noon, at midnight, and this sense also it is used, at 5 in the morning, like this. Also it is used period of holidays, like uh, at Gurpurab or at Durga Puja, you can say. At a place, like at school, at the platform, at first, at the end, at once, at 15, at the age of a dollar cents, to indicate a price, rate, speed, like at 50 rupees. स्पीड के लिए भी हम इसे यूज़ करेंगे अगर किसी व्हीकल की स्पीड बतानी है. रेट एंड प्राइस, इसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं. सम मोर वर्ड्स आर देयर, वर्ब्स इन फैक्ट आर देयर, लाइक लुक, स्टेयर, ग्लेयर, थ्रो. तो इनके साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं.